Amid concerns over supply disruptions triggered by the West Asia crisis, researchers at CSIR National Chemical Laboratory have highlighted dimethyl ether or DME as a potential indigenous alternative to LPG, particularly for domestic cooking fuel. The Pune-based organization said its researchers have developed a patent-protected DME production technology using an indigenously developed catalyst that enables efficient conversion of methanol into DME. NCL ने एक टेक्नोलॉजी का विकसन किया है जो मेथनॉल से डाईमिथाइल ईथर नामक एक ईंधन बनाता है, जो कि एक क्लीन फ्यूल है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो LPG से मिलती जुलती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उसे 7 बार तक प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाता है, उसका द्रव रूप में परिवर्तन होता है, जैसे वही जो LPG के लिए भी होता है। इसीलिए डाईमिथाइल ईथर हम LPG के साथ मिक्स कर सकते हैं और उसी सिलेंडर में हम उसको मिक्स करके एक क्लीन ईंधन के जरिए उसको फ्यूल के जरिए हम पहुंचा सकते हैं घर घर में। Researchers say blending up to 8% DME requires no changes to existing infrastructure, including cylinders, regulators, or burners. We developed two methods actually. One is syngas to DME, and the another one is methanol degradation to DME. We started this journey around 2004, around 2 decades back. That is syngas to DME, and then we are concentrating now on methanol degradation. This DME can be easily blended with LPG, the current LPG, what we are working in a domestic or wherever we are working. So 8% to 20% we can easily blend. While China began adopting DME nearly 2 decades ago, India is now stepping up efforts amid the West Asia crisis. CSIR NCL, in collaboration with an engineering partner, plans to scale up to a 2.5 ton per day demonstration plant within 6 to 9 months, positioning DME as a cleaner, cost-effective and energy-secure alternative to LPG.